ओंटेरियो के फाइनेंस मिनिस्टर पीटर बैथलन-फेलवे ने ओंटेरियो का 2024 का बजट पेश किया, बिल्डिंग अ बेटर ओंटेरियो। इस बजट की कुछ खास हाईलाइट्स असी इस प्रोग्राम च डिस्कस करांगे, जिदे अंदर हाईवे 413 की गल की है, मूवमेंट ऑन हाईवे 413 वो भी जल्द तो जल्द डिवेलप किया जाएगा। बजट डेफिशिएट 2024-25 का जोड़ा बजट डेफिशिएट है 9.8 बिलियन दसिया गया है और कहा गया कि 2026 के इलैक्शनस तो पहले इनू जोड़ा बैलेंस करने की गल की गई है और जोड़ा डिले दसिया गया कि बैलेंस हाले तक क्यों नहीं होया, उहदे लई इकोनॉमिकल अनसर्टेनिटी, पूरी दुनिया च एक इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी चल रही है, उहदे तहत जोड़ा बजट बैलेंस की गल हाले नहीं की और आज जोड़ा बजट पेश किया है ओंटेरियो की हिस्टरी का वन ऑफ द लार्जेस्ट स्पेंडिंग है और जोड़ा बैलेंस ऑफ बजट है 2026 की इलैक्शन तो पहले किया जाएगा, फाइनेंस मिनिस्टर ने दसिया है। असी कुछ होर हाईलाइट देखते हैं हैल्थ केयर की इन्वेस्टमेंट को लैके। हैल्थ केयर के अंदर $500 million की इन्वेस्टमेंट की गल की है, जिथे कि यॉर्क यूनिवर्सिटी के कैंपस जोड़ा कि वॉन्च कैंपस है, फर्स्ट मैडिकल स्कूल कैनेडा का खोलिया जाएगा, जिथे फैमिली डॉक्टर्स को ट्रेन किया जाएगा, होर नर्सिज हायर की जाऊगियाँ, रजिस्टर्ड नर्सिज उन्होंने रिक्रूटमेंट ज़्यादा होगी। ओंटेरियो कॉलेजेस ऑफ नर्सिज जड़ियाँ उन्होंने नर्सिज की रिक्रूटमेंट होएगी और आ जोड़ा पहला कैनेडा का मैडिकल स्कूल होएगा जिथे फैमिली डॉक्टर्स ट्रेन किए जाओगे हैल्थ केयर की इन्वेस्टमेंट को लैके। 600,000 तो वध जोड़े पेशेंट्स है प्राइमरी केयर च इंक्लूड होगे, हायरिंग मोर रजिस्टर्ड नर्सिज। इन्वेस्टमेंट की गल की गई है होम केयर के अंदर, मैंटल हैल्थ की केयर के अंदर, आ सारा हैल्थ केयर की इन्वेस्टमेंट जी इन्वेस्टमेंट की गई है। ट्रांजिट को इंप्रूव करने की गल की है GTA च, पील च, ब्रैम्पटन च और पूरे ओंटेरियो के अंदर। जोड़ा गैस टैक्स है, गैस कट 1 अप्रैल 2024 तो फैडरल सरकार का जोड़ा कार्बन टैक्स है 23% वो लगन जा रहा है। वो पहले भी अनाउंसमेंट की थी प्रोविंस सरकार ने कि प्रोविंस सरकार कंटिन्यू रखेगी, गैस जोड़ा कट है, गैस टैक्स का कट है वो कंटिन्यू रहेगा ओंटेरियो की तरफ तो। ऑटो इंश्योरेंस की गल की है क्योंकि ब्रैम्पटन का एक बहुत खास मुद्दा है। ऑटो इंश्योरेंस च रिफॉर्म्स की इस बजट से गल की गई है कि काफ़ी जोड़े कंज्यूमर है ऑटो के उन्होंने कुछ ऑप्शनस दित्तियां जाऊगियां ताकि वो अपनी कुछ कवरेज चो ऑप्ट आउट कर सकन ताकि इंश्योरेंस घटाई जा सके। रिफॉर्म्स की गल की है ऑटो इंश्योरेंस की। ऑटो थैफ्ट ये उपर इन्वेस्टमेंट की गल की गई है, इन्वेस्टमेंट टू कॉम्बैक्ट ऑटो थैफ्ट 46 मिलियन ओवर लास्ट नैक्सट 3 ईयर्स ताकि जोड़े 4 नवे हैलीकॉप्टर्स OPP ਨੂੰ पुलिस फोर्सिस ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਓਗੇ ताकि जोड़ा रीच टाइम है पुलिस फोर्सिस का क्राइम सीन्स से एक्सीडेंट्स से पहुँचने का हैलीकॉप्टर्स के जरिए उन्होंने घटाया जाऊगा। सो 4 नवे हैलीकॉप्टर्स बाय करने की गल की है। स्टूडेंट्स वेपिंग ना करन ਇਹਦੇ ਲਈ स्कूलों के अंदर कॉलेजेस च यूनिवर्सिटी च ਉਹਦੇ डिटेक्टर्स लाए जाओगे। सो प्रोटेक्टिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम वेपिंग ਇਹਦੇ उपर इन्वेस्टमेंट 30 मिलियन की इन्वेस्टमेंट ओवर 3 ईयर्स टू इक्विप स्कूल्स विद सिक्योरिटी कैमरास, लाइटिंग एंड वेप डिटेक्टर्स। सो वेपिंग तो दूर रखने लिए स्टूडेंट्स को वो इन्वेस्टमेंट की गल की गई है। ट्यूशन जी है इनू फ्रीज रखा जाएगा अनदर 3 ईयर्स और ये 1.3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है टू स्टेबलाइज पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन इंस्टीट्यूशनस। हुण हाई स्पीड इंटरनेट की गल करिए, काफ़ी ओंटेरियो के इंटीरियर्स ओंटेरियो की कम्यूनिटीज़ है जिथे हाई स्पीड इंटरनेट नहीं है। 3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की गल की है कि अगले साल 2025 के एंड तक हाई स्पीड इंटरनेट ओंटेरियो की हर कम्यूनिटी तक रीच कर जाएगा। लॉट ऑफ स्पेंडिंग इस बजट से बहुत सारी स्पेंडिंग की गल की गई है जोड़ा कि 1.8 बिलियन वो हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, हाईवे 413 और बाकी जोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 1.8 बिलियन जी इन्वेस्टमेंट की जाएगी। और इस बजट के अंदर जब असी दसीए कि काफ़ी ओंटेरियो की हिस्टरी का वन ऑफ द सब तो कॉस्टली, सब तो महंगा स्पेंडिंग वाला बजट है और बजट डेफिशिएट 2024-25 का असी थानू दसता है कि जोड़ा बजट डेफिशिएट है 9.8 बिलियन है। लेकिन 2026 की इलैक्शन तो पहले फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि बजट बैलेंस जोड़ा बैलेंस बजट पेश किया जा सकता है और ओपोजिशन पार्टीज़ के उपर यदा रुख रहा ओंटेरियो लिबरल, ओंटेरियो NDP उन्होंने अपनी नाखुशी जताई है इस बजट से। सो असी कोशिश करांगे कि असी फाइनेंस मिनिस्टर नाल भी आने वाले टाइम पर गल करिए। अज देखते हैं बजट की सारी आ खास पेशकश। Mr. Speaker, on behalf of Premier Ford and our entire government, I am pleased to introduce the 2024 Ontario budget, our plan to build a better Ontario. Mr. Speaker, on behalf of Premier Ford and our entire government, I am pleased to introduce the 2024 Ontario budget,
our plan to build a better Ontario. Just as families and businesses are not immune to economic uncertainty, neither is government. Despite these challenges, we are delivering on our plan to build by investing and attracting better jobs. We're building roads, we're building highways, we're building public transit, all the while keeping costs down for families and businesses. We're going to follow through on a plan that is working, knowing that the higher deficits compared to what we projected last year will be time-limited, while the return on investment will be felt for decades and for generations to come. And, Mr. Speaker, we will continue on our path to a balanced budget. We told the people that we were going to invest in more roads and highways. And does this budget invest in more roads and highways, I ask you? Yes. We told the people that we were going to invest in more transit. And does this budget invest in more transit? Yes. And we told the people of Ontario that we were going to invest to build more houses. And does this budget invest in more houses being built? And we told the people that we would do everything in our power to keep costs down. No new taxes, no new tolls, no new fees. And we have done that, Mr. Speaker. In fact, we've taken action after action that together are saving the hard-working people of Ontario thousands of dollars each and every year. Under the leadership of Premier Ford, this government scrapped the tolls on the 412 and 418 in Durham region, a move that will save drivers $68 million by 2027. While we need the federal government to pause or cancel their carbon tax increase, we will continue to do what we can to help people manage the impact. And that is why I'm so proud to announce that our government is proposing to extend our gas and fuel tax cuts until the end of 2024. Ontario drivers will continue to save over 5 cents per litre every time they fill their cars for the next 6 months. This will save Ontario households an average of $320 over the 2.5 years since the cuts were first implemented in July of 2022. You know, that's real money back in their pockets. We're also eliminating the 6.1% wine tax and maintaining the beer tax freeze for an additional 2 years. As well, Mr. Speaker, a freeze on college and university tuitions for at least 3 more years. And we're moving forward with auto insurance reforms that would provide more choice and flexibility to drivers in order to keep their premiums more affordable. And, Mr. Speaker, we are also stepping up supports for some of our most vulnerable by expanding the annual income eligibility threshold for the Ontario Guaranteed Annual Income System program for low-income seniors, and ensuring that the benefit is indexed to the rate of inflation. And this one move will result in about 100,000 more Ontarian seniors receiving support, while increasing the support that eligible seniors get. In Windsor, shovels are already in the ground to expand Highway 3, with planning well underway to build a new interchange connecting the 401 to the Lausanne Parkway. We're expanding the Hazel-McCallion Light Rail transit line, including a 2-kilometre extension and loop in Mississauga through to Confederation Parkway, as well as a stretching to Brampton Highway. Mr. Speaker, this is the right time to make this investment in these fast-growing communities. We're also well underway on no fewer than 4 priority subway projects in the GTA, including the Ontario Line, the Scarborough Subway East Extension, the Yonge North Subway Extension, and the Eglinton Crosstown West Extension. Speaker, this is the largest transit investment in North America, and we are not slowing down. We're investing in GO expansions in Kitchener, from Oshawa to Bowmanville and Niagara, making new investments in GO stations in Bramalea, Aurora, and Stouffville, all part of one seamless transit network. And, Mr. Speaker, I'm very pleased to announce the first new medical school in Canada that is focused on training family doctors with York University in Vaughan. In the 2024 budget, our government is providing $49 million in supports to help police services across Ontario crack down on auto theft. We're also going to be investing $46 million over 3 years to launch a new air support program, which will include purchasing 4 new helicopters to help our police services in the Greater Toronto Area increase patrols and improve response times to major incidents. You know, Mr. Speaker, these helicopters will help police crack down on auto theft, as well as street car racing, carjacking, impaired driving, while assisting in apprehending violent criminals and locating missing persons.
Our budget will also invest $30 million to provide new protective equipment to fire departments in rural Ontario communities. We have always had the backs of our first responders who have ours. And Mr. Speaker, our government is also not shying away from investing to protect the most vulnerable among us. We're investing $27 million over 3 years to enhance services for individuals impacted by sexual assault and domestic violence, and $6.4 million over 3 years to provide legal support for survivors of sexual assault and for children who are victims or witnesses of crime.